Vaheguru Ji Ki Fateh. We are starting a media conference today to commemorate a historic development. I will chair this session. I will speak in English and it will be translated by my colleagues into French, and accordingly I will try to also do it into Punjabi. For the benefit of those who will only be hearing it in French and English, I would ask Sonia and Narindra to translate whenever I speak into French. We are starting the session with an ardas. An ardas is a supplication, a prayer of thanks, which uniquely will be led by Baba Ranjit Singh, about whom we are gathered here today. Madame la générale Parco, qui est la directrice légale de Sikh Uni, est venue ici pour faire une conférence de presse par rapport au monsieur qui est situé à sa gauche. Tout ce qui sera dit ici en anglais et en français sera traduit simultanément et également diffusé sur des chaînes de télé en Angleterre. ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਾਏ, ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਡਿਠੈ ਸਭ ਤੁਕ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਾਦ ਸਮਰੈ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਸਭ ਤਾਈਂ ਹੋਏ ਸਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਤਾਈਂ ਹੋਏ ਸਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਕੀ ਜੋਤ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪੇ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਖੋਪਰੀ ਨਵਾਈਆਂ, ਚਰਖਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਉਦਾਹਰਨ ਸੇਵਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਾ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਨ ਮਾਣਾ ਕੇ ਮਾਨ ਤਾਣਾ ਕੇ ਨੋਚਾ ਕੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਨੰਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਿਰਦਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀਓ, ਆਪ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ, ਸਮਰੱਥਾ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਵਾਸਿਓ, ਆਪਣੀ ਅਸੀਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। In 2002, when Baba Ranjit Singh, who is sitting on my left, went to renew his residence card because it had expired, he was told that he would have to remove his turban for his photograph. He did not have to do that on the previous occasion, and therefore he was surprised by the request. Baba Ranjit Singh arrived in this country because he saw a future of liberty, equality and fraternity which he enjoyed until that day
when they asked him to remove his turban. Monsieur Singh s'est situé à la gauche de Madame la directrice légale de Sikh Uni. Et en 2002, il a voulu renouveler son titre de séjour en France. Il a été refusé puisque Monsieur Singh avait été obligé de retirer son turban, chose qu'il a bien évidemment refusée. Et dû à ce refus, dès lors, sa demande avait été refusée. Donc lui qui croyait que c'était un pays dans lequel il y avait des libertés, il pouvait venir en toute confiance, il a été bien évidemment déçu et malheureusement surpris de cette décision. C'est la raison pour laquelle il a fait appel en justice. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, puisque presque 9 ans plus tard, sa candidature, son recours juridique a été accepté. For the benefit of the media who is French speaking, if you choose to, because I haven't apprised myself of whether you are English speaking too, if you think that it's not necessary, do let us know so that we can proceed on that basis. So from that day, Baba Ranjit Singh, as a Sikh would, ventured to seek his rights in France, a country he loves until today. Yesterday we visited him in his apartment in France, in Paris, and he was not aware yet of the decision of the United Nations Human Rights Committee. And the day before, when I called him and asked him, "How old are you?" he told us that his birthday is today, the 12th of January. What a coincidence. He told us he will be 76 and that he was ashamed that for so many years of his life he has done no seva, no service to community. I had some good news for him that he was then not aware of. And I said that we will come and tell you about how you have done a great service for religious freedom, for humanity, and for the community. So we broke that news to him yesterday. And he was initially speechless, and then he said, "It's nothing to do with me. I was a conduit, I was a channel through which this particular issue was to be fought." Donc la directrice légale et d'autres personnes sont allées voir Monsieur Singh hier dans son appartement situé à Paris en France pour lui faire part justement de tout le processus juridique qui était mis en cours depuis 2002 et pour lui dire que sa décision avait été acceptée. Et donc lui il a répondu que bien évidemment c'était tout à son honneur et tout à son honneur de sa liberté religieuse qui avait été respectée. Et malgré tout cela, donc un long combat a été quand même établi. Et puis nous en sommes ici avec cette conférence de presse qui est diffusée simultanément en 3 langues, en indien, en français et en anglais, sur 2 chaînes anglaises. Throughout these proceedings, if any new member of the media arrive, can the Sangat kindly provide them with the media kit so that they have the press release and everything else that goes with it. So what happened after that was that Baba Ranjit Singh tried in vain to get redress from the authorities, from anyone else that could have helped him, until the time came when France passed a law in 2004 which banned religious signs in schools. It was unconnected with ID documents, which was what Baba Ranjit Singh's problem was, but we later saw that the connection was indeed made when Shingara Singh Ji, who is also in this room today, went to renew his driver's license and was told that he would have to remove his turban in order to take a photograph for his driver's license. So this is what we've called the ID document cases. We filed these cases in the French courts. When I say we mean the Sikh Sangat of France was given assistance by within the community, and we, United Sikhs, was asked to look into the legal issues of how these cases could be fought. Looking back, when anyone fights a battle, whether it's a personal battle, a legal battle, the only thing that makes you fight it is because you believe in it, not because you're sure of victory. Indeed, the Sikh history is testimony of that when our gurus went to battle, it was not because they were overpowered, they had an overpowering army or the best equipment, but because they believed it was the right thing to do. Hence, United Sikhs, with all these organizations in Europe and America and India, mounted a legal challenge of what was later known to be the right to turban cases. We filed cases for children who were expelled from school. We filed cases for Baba
Ranjit Singh, Shingara Singh, and today we are here to announce that one of the cases that we filed in France, which of course we lost in the French courts, was Baba Ranjit Singh's case, which we then took to the United Nations in December 2008. We launched that legal battle with the UN with confidence that the UN would uphold religious freedom, but not sure that the world climate would allow it to happen. Donc ce que Madame Mejindra Kaur vient de dire, en fait, c'est que déjà en 2004, quand Monsieur Singh avait essayé de renouveler ses documents d'identité ici en France, il lui obligeait, il était forcé d'enlever son turban pour pouvoir faire la photographie d'identité, chose que bien évidemment il a refusé, non pas pour la refuser d'une façon totalement gratuite, mais justement pour revendiquer avec dignité, avec honneur, ses droits religieux, sa croyance religieuse qui se voyait ici violée. Donc la France avait bien évidemment refusé cela. Donc face à ce refus, M. Singh a mis en marche tout un système juridique et légal, tout comme le monsieur, je pense, qui est assis à sa gauche, qui avait essayé de renouveler son permis de conduire, il avait exactement les mêmes problèmes. Et eux, ils ont répondu, écoutez, nous ne comprenons pas, puisque nous allons faire une photo d'identité, notre visage sera parfaitement reconnaissable, on voit notre taille, nos yeux, nos oreilles, notre cou, en quelle raison je dois enlever mon turban? Et donc après, ils ont fait un argument de poids, qui après plus tard a donné leur victoire, mais en fait, ce qu'il faut aussi retenir ici dans la leçon, ce qui vient de se passer avec M. Singh par rapport aux Nations Unies, c'est quand même une loi qui a été votée en 1981 par la France, vient d'être ici, on va dire, détrônée depuis très peu, puisqu'en fait, ce qu'eux revendiquent surtout, c'est leur liberté religieuse et leur croyance, de manière à pouvoir se montrer sur un document d'identité dans tous les pays, puisque s'ils sont amenés à enlever leur turban pour faire une photo, ils seront amenés à le faire tout le temps. Donc, par conséquent, leur identité religieuse sera tout le temps violée. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. I still recall in New York in December 2008 that Baba Ranjit Singh and Shingara Singh, of course, could not travel to New York because they did not have ID documents, but that we were launching a legal battle in the UN. But because of our unique identity, where we are required to wear the kirpan if we are Amritaris, we were not able to go into the UN buildings in order to lodge our battle. So we had a very interfaith event at the Church Center just outside the United Nations, where we could see the flags of the various countries flying in our backdrop, and we announced that we were, in no uncertain terms, suing France over religious freedom. We were told that we were mad because France is a beautiful country, but it's also a very strong country, and that the odds might be against us. I will cut the long story short because the story will be told by Baba Ranjit Singh as to what he went through, and also by Mia Gonzalez and Jet Miller, who are waiting on the phones to be asked questions from you, from our New York law firm of O'Melveny and Myers, who launched this legal battle by filing the cases pro bono. By that I mean, United Sikhs is an organization that is funded by the community. But many a times the community is not able to meet its own obligations, so we turn to firms like pro bono firms like O'Melveny and Myers and various other Sikh lawyers who participated without taking fees to take these cases to the UN. The nutshell of our argument before the UN was that Baba Ranjit Singh will always look like this at all times, that if you remove his turban, indeed he would look different. So the French government argued that all we are asking them to do is remove his turban for 2 minutes to take a photograph. Why should that be too embarrassing? Why is that an infringement of religious freedom? We argued back that it is not just for 2 minutes, but that every time Baba Ranjit Singh goes to a bank, and if his photo was without a turban, every time he stopped on the streets for any of his ID documents, or if in the case of a passport, someone is asked for the passport, they will not look like their photo if the photo was without their turban. So we argued that France's requirement to bare their heads was indeed not a security requirement because they would not look like their photo. But instead, the security people could ask them to remove their turban each time to match the photo with the person. And therefore it was not just a 2 minute of removing his turban, but a continuous degrading treatment every time he would have to produce his ID document at a bank, on the streets,
at checkpoints, at immigration points. Therefore, it was not a case of a de minimis infraction. We can tell you that the United Nations, in its 102nd sitting last year, considered the submissions by United States lawyers O'Melveny and Myers, put together from evidence given by many, many Sikhs from around the world who produced photographs of them using driver's license with their turbans, passports with their turbans, with no problems, both in Europe, America, and Asia. And we were able to convince the United Nations Human Rights Committee that France had violated Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights when it required Baba Ranjit Singh to remove his turban for his ID document. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, M. Singh devait se rendre à New York pour pouvoir poursuivre sa bataille juridique et légale qui a été mise en place par la directrice légale. Mais ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il n'avait pas pu renouveler ses documents d'identité, vu qu'il n'avait pas laissé faire sa photographie, il n'a pas pu se rendre à New York. Mais cela n'a pas empêché le processus juridique de continuer. D'autant plus que ce qui s'est passé, c'est que les arguments qui ont été avancés, c'est que le problème, c'est que la France disait oui, non, mais de toute façon, il doit le faire parce que ça prend que 2 minutes. Mais le problème, il n'est pas au niveau de prendre 2 minutes pour enlever le turban pour faire une photo d'identité. Le problème, il vient que chaque fois que M. Singh ou quelqu'un qui veut renouveler un papier d'identité ou un permis de conduire, à chaque fois qu'il y aura un contrôle à la banque ou même dans la propre rue, un contrôle avec des policiers ou que sais-je, chaque fois il aurait été obligé d'enlever son turban. Donc ce qui aggravait encore plus, non seulement sa situation religieuse, mais également sa situation en tant que personne. C'est la raison pour laquelle ces personnes-là ont fait appel aux Nations Unies. Et les Nations Unies, elles ont donné l'argument, donc en quoi cela dérangerait que M. Singh puisse porter un turban où son visage est entièrement visible. Argument que la France n'a pas pu en aucun cas réfuter. Today, with victory earned, it's easy to say that the battle is over, but the battle is not. Because whilst the United Nations Human Rights Committee has ruled that France produced no evidence that the wearing of a turban interferes with the recognition of a person, it's still down to France to honour its obligations under the protocol and the covenant, the ICCPR, in order to change its laws and frameworks so that people like Baba Ranjit Singh indeed may apply for his residence card. We know that the United Nations has given France until the 15th of March to make a statement as to how it will review its procedures and framework of law in order to accommodate Sikhs who have to wear their turbans at all times, including while taking photographs. Before I hand the microphone to Baba Ranjit Singh, we have a short film which we will play called Fighting for My Crown. It was made in the early years after the French law banning science in schools was introduced. It will give you a summary of the problems the kids faced when they were expelled from school, that men like Baba Ranjit Singh and Shingara Singh faced when they were asked to remove their turban for their ID documents. But I would like to say that I personally love this country, France, because I was introduced by people who love it. And we also, as Sikhs, admire people who stand up to be different. So yes, France is different. France wants to uphold that difference, and we accept that. But we would like France to take into account that the Sikhs in this country are part of that difference. That the Sikhs, looking as they are, should be able to do their business, be as French as the next person playing soccer or supporting the same soccer team, but to be allowed to practice their faith. I now invite my colleague to play the 10-minute film. Depending on the requirements of the live transmission, we will end the film as required or as requested. And if I may now draw your attention to the film. Donc la communauté des Sikhs unis sont parfaitement conscients qu'ils habitent en France et font tout pour s'adapter à cette culture, avoir les mêmes goûts des équipes de football, les mêmes goûts culturels. Mais ceci étant dit, ce n'est pas pour autant qu'ils vont reculer devant le droit à faire respecter leurs croyances religieuses. C'est la raison pour laquelle le comité des droits de l'homme a établi que la France n'avait pas réussi à démontrer en quoi le port du turban pouvait troubler ou pas un document d'identité
ou un permis de conduire. Donc c'est pourquoi pour eux, selon la France, il y avait une violation de l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le ICCPR, qui était entré en vigueur en France le 4 février 1981, mais ceci a été totalement réfuté puisque le cas de M. Singh a obtenu la victoire devant l'Organisation des Nations Unies, puisque la France n'a pas réussi justement à démontrer. Are we showing the film first and then going to the next stage? J'ai des copains français, roumains, et je suis fier d'être French, Punjabi. Même si je suis un Sikh, personne qui fait différemment. Le turban c'est plus important dans ma religion parce que c'est l'identité des Sikhs, c'est mon culture, c'est plus important dans ma religion. It was just before the Christmas of 2003 when I got a call from another fellow director of United Sikhs who said that, have you heard that France is about to make a law banning religious signs in schools and that it will include the turban? So United Sikhs decided that we wanted to take this up as an issue because now a law was going to be passed which would affect the younger generation of Sikhs in schools whereby they would not be allowed to wear the turban. And so the first stage of our involvement was creating awareness, diplomacy. We went for several meetings with the government, whether it was the Education Ministry, the Religious Department, in the Home Ministry, the Foreign Affairs Ministry. We were assured time and time again that no Sikh school child will be turned away from the gates of the school over this issue. Ça se passait, ils ont donné la décision contre la loi qui est passée en 2004 et puis par rapport à la loi ils m'ont viré de l'école, ils m'ont pas pris parce que je porte un turban sur ma tête et puis moi je veux garder mon turban, mon religion c'est mon religion c'est plus important que la loi de France, je vais juger contre la loi. उन्नीस सौ 92 10 साल का रेजिडेंट कार्ड मिले सी और 2002 फरवरी जब खत्म होया तो मैं उत्थे रिन्यू करने वास्ते गया क्योंकि मेरे जिन्ने पहले डॉक्यूमेंट्स ने रेजिडेंट कार्ड हो गया या ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो गया या रिफ्यूजी कार्ड हो गया सारे मेरे पग नाल सन ते हुण नवा कानून बनन करके 2002 जब मैं फरवरी से रिन्यूअल वास्ते गया उन्होंने मेरे को नंगे सिर फोटो मंगी जोड़ा मैं कभी एज पर माई रिलीजन में नहीं दे सकता कि मेरे पास ऑब्लिगेटरी है टर्बन और किसी हालत में रिमूव नहीं कर सकता. In all the meetings, some of them were closed door meetings, it was brought home to us that this law was not meant for the Sikhs. And what they mean by that was that we've been caught in between the intention of the legislators and the effect of the law. They were not prepared to say this publicly, but we all knew that they perhaps regretted that this law had to be passed and that the Sikhs were affected. Le fait que les Sikhs en France n'aient pas été consultés, pour moi c'est clairement une rupture d'égalité de traitement. On n'a pas été traités comme les autres, on a été traités comme partie négligeable dans ce problème, alors qu'on est les premiers en fait concernés. Possibility the Human Rights Committee's decisions. I know that France has looked that up before. We went to litigation because it was we were in a sense forced to do it. We were obliged to do it.
because of the recalcitrance of the French government or the French authorities in France, who would not permit these boys to wear turbans, to go about with their hair unshorn. I think it's frightfully important from the point of view of the community that there is a successful conclusion to these cases, because an adverse decision in these cases may well be seized upon by other jurisdictions, other countries where there are Sikhs who may face the same sort of problems as these young boys are facing in France. Quand les administrations françaises aux préfectures de police, au même ministère de l'Intérieur, ils me posent la question pourquoi vous ne donnez pas les photos tête nous. Moi, je donne chaque fois l'explication. Pour moi, je suis en sécurité. Pour moi, c'est obligatoire de couvrir mon tête 24h24. Je suis choqué chaque fois quand ils me demandent les photos d'identité tête nous. Tant qu'une Sikh, pour moi, c'est pas possible de donner une photo tête nous. Comme vous n'avez pas de permis de conduire, on ne peut pas conduire la voiture. Moi, je n'ai pas permis de conduire depuis 2004. Je conduis toujours ma voiture sans permis. Les deux fois, ils m'arrêtent, ils mettent la PV, des fois, ils me donnent les warnings. Et les préfectures de police, ils sont toujours à temps pour voir une photo tête nous. Et moi, je ne veux plus donner une photo tête nous. Je préfère de donner la tête. Je ne peux pas donner une photo tête nous parce que je suis en sécurité. Pour moi, ce n'est pas possible. En France, encore peu de gens nous connaissent. Les gens nous assimilent beaucoup aux musulmans. Ils pensent qu'on est musulmans parce qu'on porte un turban, parce qu'on a de la barbe. Donc, pour eux, la barbe et le turban sont assimilés directement à l'islam. Il y a encore une majeure partie de la population qui ne connaît pas l'existence des Sikhs. Le sikhisme, pour moi, c'est des études qui dureront toute ma vie, jusqu'à ma mort. Et l'école, c'est juste pour avoir un métier, avoir une situation stable. Mais pour moi, ce qui est important, c'est surtout le sikhisme. Après cette affaire, j'espère que les Sikhs seront reconnus dans toute la France, qu'on sera acceptés et intégrés avec toute notre dignité, c'est-à-dire avec notre turban, sur les cartes d'identité, sur les permis de conduire, à l'école. Et je ne pense pas que ce soit un problème pour les Français de nous accepter, parce que nous, on est très gentils. Et on n'a aucun souci pour voir un Sikh français au Sikh vrai. Dans la rue, on n'a aucun problème. Les problèmes, ça pose juste dans le bureaucratique français, c'est tout. Moi, c'est dur quand même être un Sikh français ou un Sikh arrière. Je pense qu'on peut très facilement être Sikh et français à la fois. Notre religion nous permet de nous adapter très facilement à toutes les cultures des pays dans lesquels on vit, comme on voit en Amérique ou en Angleterre. Et ce serait aussi une très bonne chose pour nous et aussi pour les Français, qu'on puisse vraiment faire partie de la population, des citoyens de France. Ces noms inscrits sur les murs. Et je me pose la question, je me demande vraiment comment ces hommes ont pu venir jusqu'ici, quitter le Punjab et venir jusqu'en France pour se battre pour la France, sans savoir absolument rien de la France. Et je m'interroge et je respecte ce courage énorme d'être venu jusqu'ici pour se battre pour les Français. Dasal o ganda jam jaayno, मैं सिवा स्कूल में
ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਤਿਆ ਡੋਮੇਨ ਸਪੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਂਦੀ ਤੇ ਨਾਨ ਖਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਟਕਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ The Sikh turban is not a cap or a hat or a piece of costume that you could remove at will, or you could ask a Sikh to remove at will. It's not a clothing. It's like telling a black man that you cannot be part of this jury because this is good to be an all-white jury, therefore peel off your skin. Is to ask a person to do the impossible, is to ask a Sikh to remove his turban. Pour l'instant, actuellement, pour mon fils, il a pu aller à l'école sans problème. Il n'y a pas eu de problème pour Tanfrit. S'il y a un problème, moi je suis prête à aller devant la justice, à faire le nécessaire, parce qu'il est hors de question de couper les cheveux de Tanfrit. Donc de toute façon, on trouvera toutes les possibilités pour qu'il puisse aller à l'école avec le Djoula et avec le Rama à l'école. Je me bats encore pour mon cousin qui a été exclu, qui a encore 2 ans au lycée, pour les futurs Sikhs et surtout aussi pour mes enfants qui j'espère seront au lycée public français. This law, which affected a number of communities, has affected the Sikh community in a way where they have decided that it was not enough to just say that this law is against us, but that they had to do something about it. So United Sikhs then approached the Turban Action Committee in France and said that we would like to work with them. United Sikhs, c'est l'organisation qui a joué le rôle moteur dans la défense ce qu'on appelle le droit au turban aujourd'hui, mondialement, right to turban. Task from day one, which we are almost 2 years into this campaign. We have lost all the cases in the lower courts as we expected to, but we could not accept a law that went against us. We had to fight it. What do we do from here? There is no other alternative but to use the best methods available. We have engaged the best lawyers. It has been costly, but we must remember this is not a case of 6 people fighting for their right to wear the turban. This is about 25 million Sikhs' right to wear the turban. I would like to address the viewers and the media who just joined us that you are witnessing a historic media conference where we have announced that the United Nations Human Rights Committee in its 102nd session last year ruled that France had violated Article 18 of the UN Convention, had violated the Article 18 of the International Convention, International Protocol Covenant Against Civil and Political Rights, ICCPR. And they did so by saying that France had not produced any evidence that the wearing of a turban indeed hinders identification. It's historic because it's the first time Sikhs have gone to the United Nations against a nation. We've had cases from Canada in the United Nations against employers involving the wearing of turbans vis-a-vis taking them off, or helmets. But this is the first time that we are taking a case involving the rights of a person living in a country which have been taken away through statutory regulations. I now would like to call upon our lawyers
Albany and Myers representatives who are waiting on the phone, and they've been listening into the proceedings. We've got on the phone Mia Gonzalez as well as Jet Miller. They are part of a team of lawyers over the last many years. I call it many years because it's long when you don't know where the road will take you. It's easier to sit here today and say that the journey was successful. But they have worked on a no-fee basis, pro bono, a very significant international law firm, to produce these results, which have surprised and made us all happy. I was speaking to the Maharani, who is the Minister of State for External Affairs, Praneet Kaur, today on the phone, and she was very happy in receiving this news and said that it's everyone's hard work. It is indeed everyone's hard work. Those among us who are more skeptical about the law, I would say that the law is a means. It should not be the end, but sometimes you have to turn to it. And as my mother would say, der hai haner nahi. Ultimately, you get justice. Our Gurbani tells us, pura nyao karega satgur mera pura, that you will get justice if justice is due. So I would now like to call upon Mia, if you would come on the call and share with us the statement that you have given us earlier for both the community as well as the international community who has watched this particular case and welcome the decision of the United Nations Human Rights Committee, the views of the Human Rights Committee. Donc, ce que la directrice légale vient de dire, en fait, c'est que ceci est une conférence de presse quand même qui est unique, qui est historique, et les mots sont pesés, puisque c'est la première fois quand même que la communauté des Sikhs fait appel aux Nations Unies et en plus gagne. Et non seulement cela, mais en plus ils ont réussi à démontrer que c'est la France qui a fait une violation de l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le ICCPR, qui est entré en vigueur en France le 4 février 1981. Donc, en plus de ces victoires légales, il y a également eu une victoire religieuse, des croyances et du respect de chacun d'entre nous, chose qui a été dévoilée, qui a été communiquée aux avocats que M. Sikh n'avait pas pu aller voir, qu'il n'avait pas pu avoir ses documents d'identité, qu'il n'avait pas pu faire son dossier d'identité. Et donc nous sommes maintenant actuellement en direct en contact avec le cabinet O'Melveny & Myers, un cabinet d'avocats de New York, qui a été engagé par United Sikhs pour défendre leurs droits. Ils ont été bien évidemment plus que heureux en sachant la victoire. Et donc là maintenant nous sommes en direct avec eux. So Mia, if you want to add to your written statement, which was read out in French. Mia? Yes. It's your time. I just wanted to say that we at O'Melveny and Myers are very pleased with the views that the committee adopted, and we welcome France's compliance with these findings. Similarly, we also look forward to the resolution for Shingar's case still pending before the committee. Okay, Mia, we're having some amplification issues over the volume. And whilst they're being sorted, so I will invite members from the floor to ask for any further questions if they want about the decision, if I haven't made it clear enough. ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. I also open the question to the media to ask the lawyers in New York if you have any further questions about the implication of this decision, perhaps, because I haven't touched on that, about how we could enforce this decision or the law surrounding it, and I will also try to answer the questions. Are there any questions from the floor? Donc là, nous sommes en direct, on va dire là. Nous prenons le même bloc avec les fils, c'est bon. Non, l'autre avec les fils. Ah, sûr. Voilà, donc là, on est toujours en direct avec le cabinet juridique de New York, qui s'appelle exactement, je vais vous dire tout de suite.
Home Armenian Myers 1. Et on est également en direct live avec Sangat TV, Sangat Television, et puis avec Sikh Channel. Donc on a deux chaînes des médias qui sont ici en direct avec nous, avec en plus un cabinet d'avocats que j'ai cité tout à l'heure, mais je vous répète, c'est le cabinet Home Armenian Myers, un cabinet d'avocats de New York, qui ont été engagés par United Sikh pour défendre le droit, donc le droit de M. Singh. Donc en plus de tout ceci s'ajoute bien évidemment la victoire au sein des Nations Unies. Tout ceci ajoutant encore plus une tonalité historique et unique à cette situation. Could I first ask if there are any members from the French press who have any questions about the implications? Can a microphone be passed? Si vous avez des questions, les médias français, voilà, allez-y. Yes, my name is Annick Benoit from Agence France Presse, and I would like to know to have some background about, how many Sikhs live here in France, and Okay, this question is not particularly for Mia because it's about the profile of Sikhs in this country. I will ask my colleague Ranjit Singh, who was incidentally one of the young men who were expelled from a school in France when we took his cases up in the lower courts in France, and he will explain what the demography of the Sikh French population is. Yeah, thank you. I'm sorry, this is my first question. The second one is there any other country where Sikh are, facing such problems? Okay. If I may answer the second question, and Ranjit Singh will answer the first. You would have seen in the film young people from Belgium talking about the problems of being expelled from school for wearing the turban. I wouldn't want to repeat a hackneyed phrase that they say that if France sneezes, Belgium catches a cold, but indeed there has been a trickle-down effect. Today, United Sikhs is working with the Belgian Sikh community because 5 boys were expelled from school for the same type of issue when there was no law to ban religious science in schools. There's a group of schools in Belgium who are called the GO schools, the GO schools, who have passed a ruling that all their children will have to come bareheaded to school. And that ruling has been challenged by United States lawyers, and right now the Conseil d'État equivalent in Belgium will give us a decision sometime this year, we hope, before September, as to whether that ruling by GO, what's constitutional, is legal. So yes, there are issues in other countries. This is to do with the wearing of turban by children or on ID photos. But even without taking that into account, there are issues anywhere in the world when it comes to identity post 9/11. In the US of A, sometimes even in the UK, we all know that if a Sikh today travels through airports, more so now than before, he could be required to remove his turban, and sometimes we feel willy-nilly, without any reason or without any reason of security. And that again is being taken up by various organizations, including the Sikh Council UK, United Sikhs, and other organizations, whereby representations have been made to the European Commission as well as the Italian government, Poland, that a Sikh who travels with his turban is no greater a risk than anyone else traveling with any other apparel where any sinister device be hidden, and that the turban should not be targeted. Ranjit, if I may ask you to answer the question on the demography of the French Sikhs. Je vous répondrai en français, pour que ce soit plus clair. Donc le recensement privé fait auprès des chaque gourdoirs de France, à savoir le gourdoir de Sikh France qui est le plus grand, le plus ancien, et également les 5 autres gourdoirs qui se trouvent dans la région parisienne, et également des petits temples sikhs, des petites structures qui se trouvent à la fois à Strasbourg, à Marseille, ou bien à Pau, où il y a une communauté française d'origine française mais sikh. Nous sommes environ 25 000. Ce sont les chiffres officiels de la communauté sikh de France. Et dans une communauté, il faut savoir, pour avoir un petit regard extérieur, les Français d'origine indienne
sont plus ou moins recensés à 120 000 Français. Et dans cette part-là, il y a environ 27 000 Français, Sikhs, vivant en France, majoritairement en région parisienne et autour des grands temples de la région parisienne. Combien de Français d'origine indienne, vous dites 120 000. Merci. En métropole, juste en pleine métropole. Merci. Voilà. Sonia, you want to translate it for the viewers? Non, peinture दूसरा micro लो. Sonia, you'll have to hold on to your microphone, otherwise we will... Okay. Donc ce que vient de dire mon fils, En anglais. Ah, Traduis ce que j'ai dit en français, en anglais. yeah, so there are so many people, 6 people of the community living in France, much more than you can believe. Can you give me the numbers? Exactly 25,000 Sikh person living in Paris, near Paris, in the Parisian region of the all around the big temples, Sikhs to do the religion. Également à Strasbourg, Strasbourg, Marseille et Pau. And in the following cities, Strasbourg, Marseille, Pau. La métropole. Et la métropole de la région parisienne. J'ai compris. Merci. Is there any question for from the lawyers? Maybe, if I may prompt you, many questions would be asked. What is the effect of this UN ruling? The European Court of Human Rights have similar requirements on religious freedom. That's Article 9 of the European Convention of Human Rights. Any decision of the European Court is legally binding on France in a different way from a decision of the UN Human Rights Committee. A decision of the Human Rights Committee at the UN is referred to as a view, is persuasive on France. It calls upon France as a state that has signed the covenant and the protocol to incorporate changes in its laws and practices so that its obligations under the ICCPR are met. In this particular case, the obligation to defend religious freedom. So, yes, it's a victory at the UN. It's a moral victory. We now call upon France to convert that into a real victory, and therefore the action or the ball is in the court of France. We hope by March 15 representations will be made to the UN, which we will then reply to on behalf of our client, Baba Ranjit Singh, as to how he may now proceed to make a new application for his residence card, and that he should be allowed to wear a turban for it. Are there any questions from the people on my left? Can someone pass the microphone? The roving microphone? Thank you, sister. ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੁਐਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਰਾਂਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਐਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ Okay, I had answered the question, but ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਯੁੱਧ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸਮਝੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾ ਲੜਨੋਂ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਰ ਮੰਨਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਜੁੱਦਾਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜੁੱਧ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਟਲਸ ਹਨ। ਸੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਬੈਟਲਸ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਬੈਟਲਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਟ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਇਹ ਜੋ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ that ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ ਇਹ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਾਵਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ